बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DigiLearnersPoint। आज की इस वीडियो का टॉपिक है ई कॉमर्स मैनेजमेंट क्विज नंबर 2, यानी कि हम बैच 8 की जो ई कॉमर्स मैनेजमेंट का क्विज नंबर 2 है हम उसको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न सिर्फ बेल आइकन के बटन को हिट करें बल्कि ऑल के ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ऑन टाइम वसूल कर सकें। तो चलें अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने ये क्विज़ का बटन ब्लिंक आ रहा है, हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया एक नई विंडो ओपन हो गई। तो ई कॉमर्स मैनेजमेंट का हमने क्विज नंबर 2 अटैम्प्ट करना है जिसकी लास्ट डेट 13 नवंबर है। तो मैं टेक क्विज के बटन में क्लिक करता हूँ और आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। आप अटैम्प्ट करने से पहले सारी इंस्ट्रक्शंस को थॉरली रीड आउट करें 2 और 3 टाइम्स ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। हम टाइम को सेव करने के गर्ज से डायरेक्ट अपना क्विज स्टार्ट करते हैं बाय क्लिकिंग ऑन स्टार्ट क्विज, जो कि ग्रीन कलर के बॉक्स में है। तो मैंने इस बटन में क्लिक किया और मेरे आपके सामने पहला क्वेश्चन अपीयर हो गया है। एंड अदर स्ट्रेटजी टू कन्वर्ट अ विजिट इनटू अ सेल इज टू प्रोवाइड रिकमेंडेशंस, सेल्स, परचेज, प्रोडक्ट, स्टोर। तो इज टू प्रोवाइड परचेज रिकमेंडेशन। मेरे हिसाब से ये ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज सीपीसी? सीपीसी क्या है? 4 ऑप्शंस, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर सर्कल, क्लिक पर कॉस्ट और नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, कॉस्ट पर क्लिक। Save and move to the next question. Question number 3 is in front of you. Facebook are not displayed on the basis of search as opposed to Google AdWords. 4 ऑप्शन हैं, पब्लिक ऑफर, ग्रुप्स, एड्स, पेजेस। Ads. Option number 3 is correct. So click on save and move to the next button. Question number 4 is in front of you now. Unlike ad rank, Google AdWords depends solely on which one parameter? Keywords search, keyword rank, user behavior, keyword research. Keyword search. Save and move to the next question. Question number 5. In drop shipping, supplier is not responsible for collecting payment from customer, acting as intermediary between customer and supplier, shipments of product to customer, setting the price of product. सेटिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि हमने अपना कट रखना होता है, इस वजह से वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the major difference between a TV advertisement and a Facebook advertising?
4 options. Selective audience will see ad in Facebook. Selective audience can see ad in TV. TV ad is not available on mobile devices. TV ad is also available on mobile devices. Selective audience will see ad in Facebook. हाँ, जब हम टारगेट ऑडियंस पे जाते हैं तो वो हम अपनी मर्जी की ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं. टारगेटिंग ऑडियंस को ये डिस्कस कर रहा है. तो सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. Which one of the advertising program allows the owner of the website or blogs to insert a small amount of HTML into their sites and have ads appear there? वो कौन सा एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है जो आपको एक क्या कहते हैं HTML की एक थोड़ा सा कोड देता है जो आपने अपनी साइट पे जाके इंसर्ट करना होता है ताकि वो अपने आपकी साइट पे एड्स को शो कर सके. तो ये गूगल एडसेंस है. Save and move to the next question. Question number 8. Recommendations help companies to increase sales by following clients' previous purchase behavior and recommending similar products. Reducing cost of products with not in high demand. Reducing supply of products not in high demand. Increase discount. Similar products. I will go with the option number 1. So, save and move to the next question. Question number 9 है. The key of a relational table uniquely identifies each record or row in the table. कौन सी? Primary, foreign, supplementary, null, यानी कोई भी नहीं. तो मेरे हिसाब से ये है ऑप्शन नंबर 1. Save and move to the next question. This is the last question. Is a strategy used as a loyalty program where customers earn points on every purchase. कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास? 4. शेयरिंग पॉइंट्स, रिवार्ड्स पॉइंट्स, विनिंग पॉइंट्स, गेमिंग पॉइंट्स, सॉरी गेनिंग पॉइंट्स. तो इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी हो सकती है? तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी हो सकती है ऑप्शन नंबर 2, रिवार्ड्स पॉइंट्स. तो आई विल गो विद दैट वन. सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा क्विज सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है. काइंडली आप लोगों से गुजारिश है किसी क्वेश्चन के आंसर में क्विज के आंसर में कोई डाउट हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि सबको भला हो सके. अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.